So finally, after long wait and protest, we are finally getting entry into the Osho International Ashram. और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फलाहार खा रहे हैं और इसके बाद हम समाधि को देखने जाएंगे, वहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे. तो लेट्स कंटिन्यू दिस ब्लॉग. और सन्यासी सारखं वाटतंय, फलाहार करतोय. नो जंक फूड, नो पिझ्झा, बर्गर. व्हॉट अबाउट यू? हा, तुला तर नुसतं पिझ्झा बर्गरच लागतं ना? नाही, आज एक दिवस चालतं ना. अच्छा, नॉन टॉक्सिक फूड. जॅकफ्रूट नाही, फणस. तो अभी हम समाधि से वापस आ चुके हैं. सॉरी, मैं वहाँ पे फिल्म नहीं कर पाई बिकॉज मोबाइल वॉज नॉट अलाउड इनसाइड. तो मैं अंदर कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो व्हेन वी वॉकड इन, इट्स लाइक अ ड्रीम वॉक इन लाइब्रेरी. एंड जो समाधि का प्लेस था, वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस था और वहाँ पे मोबाइल्स अलाउड नहीं थे. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. पर चलिए मैं आपको बाकी का पूरा ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट पूरा सैर करवा के लाती हूँ. तो चलिए हम ऑडिटोरियम जाते हैं अभी. अजय, तुम्हाला कसं वाटलं आज जाऊन? ओशोंचं प्रत्यक्ष दर्शन झाल्यासारखं वाटलं. खूप आनंद वाटला. तिथून परत यावं वाटत नव्हतं. मिठी मारा वाटत होती समाधीला आणि खूप खूप आतून रडायला येत होतं. आणि भरून आलो, खूप भरून आलो. शब्दात वर्णन न करण्यासारखं. लंच बॉक्स आलाय आमचा. आम्ही आता मस्तपैकी जेवण करणार आहे. हो, हाँ, आम्ही जेवण करणार आहे. खूप थकलोय आम्ही. तो अब हम ऑडिटोरियम जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ मेडिटेशंस करेंगे. उसके बाद कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, आई टेल यू अगेन. Such a pretty place and such pretty calm vibes. I love it here. Just don't feel like going out. दिस इज द ऑडिटोरियम हॉल. अभी जस्ट हमने वहाँ से कुंडलिनी मेडिटेशन करके आए हैं और अंदर क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं था, सो आई डिडंट शूट ओवर देयर. इसलिए अभी मेडिटेशन होने के बाद मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो कुंडलिनी मेडिटेशन बेसिकली हमें वहाँ पे कुछ 15 to 30 मिनट स्टार्टिंग में वी हैव टू डांस. उससे क्या होता है, जो हमारे भीतर के जो चक्रास होते हैं वो सारे ओपन अप होते हैं कुंडलिनी ध्यान के वजह से. Okay. So overall it was a very nice experience and I'm very happy कि आज के दिन
जो एनलाइटनमेंट दिन है उस दिन को मुझे ये अनुभव करने मिल रहा है. योगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाय, इट वॉज सो नाईस. आम्ही जस्ट आतमधून बाहेर आलो, ते मेडिटेशन केलं आणि आज 21 मार्च आहे, ओशोंचा एनलाइटनमेंट डे आहे आणि त्यामुळे बरेच संन्यासी आणि माझे कलिग्स मित्र आलेले आहेत. आणि आधी आम्ही आतमध्ये गेल्यानंतर त्यांनी वेगवेगळे प्रकार आहेत मेडिटेशनचे, त्याप्रमाणे आम्ही डान्स केलं, त्यानंतर मेडिटेट केलं. अशा प्रकारे एकदम छान आणि फ्रेश फील होते. So Osho would also do paintings, and now I'm really excited to watch his paintings in person. So, being an artist myself, I feel immensely happy and lucky to see Osho's paintings in person, and these are so vibrant, beautiful, and most of it has an abstract touch, and I really love the color schemes. It's so gorgeous. This is the view outside the gallery. आज 21 मार्च है और आज के दिन ओशो को एनलाइटनमेंट हुआ था, तो बस उसी के अवसर पर हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए हैं इस इंटरनेशनल रिसोर्ट में. सो चलिए कुछ मेडिटेशन करें थोड़ा सा में यहाँ पे. वैसे हमारा इवनिंग में यहाँ पे डांस सेशंस होते हैं एंड उसके बाद कुछ मेडिटेशंस, प्रवचन, वो सब होता है. सो इट इज़ अ लॉट मोर फन, इट्स नॉट बोरिंग. सो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं होता है. इनफैक्ट यंगस्टर्स को आई फील कि ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ना चाहिए, बिकॉज अगर आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी रहे तो दिस वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बैलेंस होता है. इनफैक्ट आपका जो सक्सेस है उसमें और अधिक ज़्यादा प्रगति आपको दिखने को मिलेगी.
Osho's painting. अभी आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से। तो अब हम जा रहे हैं वाइट रोब के लिए। तो बेसिकली वाइट रोब में क्या होता है, there's again musical dance session and after that there's some lectures. We have to sit in silence for some amount of time. So yeah, let's go. So I just came from White Robe and it was an ecstatic experience. I'll end this vlog over here. Let me know in the comments below कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और until next time guys, I'll see you back in my next video. Toodles!